a captain leads from the front. And if ever a skipper set the tone for his team, it was Salman Ali Agha for ATF Southern Punjab. What a day Salman Ali Agha is having. KP have created a paradox after winning over a target that trended amongst all teams. Keeping their winning streak in check, ending the faith of batting first promises victory. Can Khalid Usman take it to Fab 4 or Salman Ali Agha has more tricks in his hat? रावलपिंडी के सब्जाजारों में आज बड़ा मुकाबला होने को है। खैबर पख्तूनख्वा बनाम सदर्न पंजाब, दोनों ही टीमें अच्छी फॉर्म में नजर आती हैं। हम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से बराह रास्त आ रहे हैं। यहाँ पर आज बेपनाह बारिश हुई। ये सिलसिला सुबह 3 बजे शुरू हो गया था और उसके बाद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। यहाँ ग्राउंड स्टाफ को उन्होंने आउटफील्ड को इस काबिल बनाया कि खेल मुमकिन हो सके। अंपायर्स बार बार मुआयने के लिए आते रहे। इम्तियाज़ इकबाल, उनके साथ मोहम्मद आसिफ थे और साथ साथ ये मोहम्मद सरफराज जो यहाँ के हेड ग्राउंड्समैन हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के। और इस मैच को अब बारिश से मुतासिर होने के बाद 5-5 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया है। पावर प्ले 2 ओवर्स का होगा और कोई भी बॉलर 2 से ज्यादा ओवर करने का मजाज नहीं होगा। किंगडम वैली नेशनल T20 कप में ये बड़ा अहम मुकाबला है और बारिश के बाद इस पिच की क्या हालत है ये हम जानते हैं मरीना इकबाल से। The sun is out for now, but we had heavy overnight rain. The temperatures are going down as the day passes by. How the weather looks today? Have a look at that. It's 27 degrees and the humidity, it's 69%. We've expected some rain afterwards. Well now, the outfield, there are some damp patches, but the groundsmen have done tremendous job to dry it out for the game. The surface, well, we have already played on this surface, but the runs are inevitable on this one. पहली इनिंग्स का स्कोर 178 रहा है 20 ओवर की गेम में, सो रन्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आएंगे। फास्ट बॉलर्स कंडीशंस का और नए गेंद का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो हार्ड लेंथ हिट करें 4th स्टंप से मिडिल स्टंप के कॉरिडोर में। बैटर्स जो भी सीधे बल्ले से खेला है और बॉडी के क्लोज खेला है, उन्होंने रन्स यहाँ पे किए। मेरा इरादा या मेरी ओपिनियन अगर आप कहें, टॉस जीतें, बैटिंग करें, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा बॉल को टाइम करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। मरीना इकबाल की ज़बानी आपने मौसम और पिच का हाल जाना और अब दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार हैं और साथ साथ शाह फैसल भी। After all the rain, the sun is out and we're all set for this latest clash of the Kingdom Valley National T20 Cup. This one is coming between Khyber Pakhtunkhwa and Southern Punjab. I've got the two skippers, Khalid Usman, Salman Ali Agha, and match referee, Mr. Ali Naqvi. Khalid has got the coin. Heads is the call. That's tails. Khalid Usman has won the toss. Khalid, क्या करेंगे? हम बॉलिंग करेंगे। 5-a-side गेम है, completely different dynamics हो जाती है गेम की, क्या कहेंगे इस बारे में? बस यही कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम में इनको रिस्ट्रिक्ट करे तो बैट्समैनों के लिए अच्छा होगा बाद में। और आपकी टीम एज यूजुअल विनिंग स्पिरिट है, विनिंग मोड में है, लेकिन बैक टू बैक गेम्स हैं, रिकवरी का ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला होगा? हाँ जी, रिकवरी का टाइम बस इतना नहीं मिला, लेकिन आज शॉर्ट मैच है तो रिकवरी हो गई हमारी अभी। और टीम न्यूज़ है, सेम टीम खेल रही है लास्ट मैच वाली। चलें खालिद उस्मान, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सलमान, कैसा देख रहे हैं? 5 ओवर्स की गेम है, कुछ ज़्यादा टैक्टिक्स या सब कुछ जो है डायनामिक्स जैसे मैंने खालिद से कहा चेंज हो गई, आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली 5 ओवर के गेम में आप ऑब्वियसली ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जस्ट यू नीड टू गो एंड यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, और कोशिश यही करेंगे कि हम भी यही करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि आप ये समझें कि क्या अच्छा टारगेट होगा 5 ओवर्स में?
जी ओबियसली ये सोचना मुश्किल है क्योंकि 5 ओवर के मैच में आप कभी भी सोच नहीं सकते कि कितना मतलब टारगेट होना चाहिए, लेकिन एक टारगेट हमने जेहन में बनाया है, अगर हम वो अचीव करते हैं तो हमारी बॉलिंग ऐसी है जिसको हम डिफेंड कर सकते हैं। और टीम न्यूज़? वी हैव सेम टीम चलें। Salman, have a great game. थैंक यू वेरी मच। So the news from the center is that Khalid Usman has won the toss and KP are bowling. यहाँ हस्बे तवक्को टॉस जीतने वाले कप्तान खालिद उस्मान ने यहाँ पर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। दोनों टीमों में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। जैन अब्बास, शारून सिराज ये इनिंग्स का आगाज करेंगे। सलमान अली आगा जो हैं वो बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं इन दिनों, बैटिंग से ज़्यादा अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। और साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस इनने कल बड़ी अच्छी फॉर्म दिखाई थी। और मास खान पर भी अपना एतमाद केपी ने बरकरार रखा है जो लेग स्पिनर हैं। तो पहली गेंद आने को है। जैन अब्बास ये पिछले मैच के हीरोज में से थे, सेंट्रल पंजाब के खिलाफ इन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई थी। 62 मैचों में 1536 रन बनाए हुए हैं। बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। अरशद इकबाल से ये रूबरू होंगे जो कि इन फॉर्म पेसर हैं। 50 विकेटें वो मुकम्मल कर चुके हैं अपने T20 करियर में। और यहाँ पर इम्कान यही है कि शायद स्पिन को हम ना देख सकें क्योंकि 5 ओवर्स का मैच है। तो अक्सर ये देखा गया है कि एतमाद जो फील्डिंग कप्तान हैं ऐसे में अपने पेसर्स पे ही जतलाते हैं। अंपायर इम्तियाज इकबाल ने इशारा दे दिया है कि खेल को शुरू किया जाए। तो पहली गेंद आ रही है इस मुकाबले की पवेलियन एंड से। वाइड के साथ इब्तिदा हुई लेकिन मूवमेंट नजर आई लेफ्ट हैंडर के खिलाफ। मरीना इकबाल मेरे साथ हैं कॉम बॉक्स में। सुबह बखैर सबको। और एक अच्छा गेम होने जा रहा है। लिमिटेड ओवर्स है, सिर्फ 5 ओवर्स की ये गेम है। कोशिश रून को जो है वो प्रमोट किया गया और कोशिश यही है ATF सदर्न पंजाब की कि इतना ज़्यादा टारगेट को अचीव किया जाए क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में शरून सिराज। नंबर्स आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छी इनिंग्स खेली थी इन्होंने। इसे उठाकर खेला लेकिन कमजोर शॉट है। 2 फील्डर माइल हो रहे हैं और ये कैच गिरा बैठे। आदिल अमीन जाकर मिड ऑन से टकराए। साहबजादा फरहान जो हैं उनको खासी चोट लगी है। ये सूरत हाल उससे मिलती जुलती है जैसे कल खुशदिल शाह ने कैच लिया था, फखर जमान उनसे टकरा गए थे। वो दोनों भी इसी खैबर पख्तूनख्वा की ही टीम में खेलते हैं। आगे खेलना चाह रहे थे और मेरा ख्याल है कॉल किसी ने भी नहीं की, यकीनी तौर पे कॉल किसी ने भी नहीं की। ऐसे जब आप इन सर्कल और इवन डीप में भी जब आप गेंद की तरफ जा रहे होते हैं कॉल करना ज़रूरी है। घुटना मेरा ख्याल है लगा है उनके शायद सीने पे। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। फरहान अली फरहान का इनके पास खासा वक्त था, ये एक दूसरे को ये कॉल कर सकते थे कि ये कैच मेरा है, लेकिन उसकी नौबत आई नहीं। फिजियो मैदान पर फौरन ही पहुंच गए थे इनकी तिबी मदद करने के लिए। अच्छा आगाज नहीं हो सका, नई जिंदगी भी मिल गई यहाँ पर जैन अब्बास को और साथ साथ रन्स भी। हाफ हार्टेड सा बिलाशुबा शॉट था और दोनों खिलाड़ियों की नजरें गेंद पर थीं। एक दूसरे को बिल्कुल उन्होंने अपने सामने आते हुए नहीं देखा। सर ये सीधा जाकर घुटना लगा है आदिल अमीन का। साहबजादा फरहान को उनकी पसली में ये तकलीफ में है, ये जाहिर हो रहा है और खासा कोलिजन था, लेकिन लग ये रहा है कि ऑफ फील्ड नहीं जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है केपी के लिए। टीम रन्स यहाँ पर ये बन गए थे सारी अफरा तफरी में। उसकी तरफ किसी की ज्यादा तवज्जो नहीं हुई मां सिवाय स्कोरर्स के।
अब शारून सिराज जो हैं मुकाबिल होंगे अरशद इकबाल के, जो बड़े टैलेंटेड बैट्समैन हैं। मिडिल ऑर्डर में खुद को मनवाते आए हैं, नंबर 5 पर खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन आज क्योंकि 5 ओवर्स का मैच है, इससे पहल की शानदार डिलीवरी, इस बार सीम से हिट किया, गुड लेंथ के इलाके को, गेंद उछलती हुई गई और छोड़ती हुई शारून को। आसान नहीं है ये कंडीशंस, क्योंकि वसीम भी हो रहा है, अर्ली ऑन थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है और 5 ओवर ही आपको मिलेंगे, स्कोर भी करना है आपने। लेकिन अच्छी गेंद थी, हार्ड लेंथ को हिट किया आउटसाइड ऑफ स्टंप, खास फीट मूवमेंट नजर नहीं आई। ज़्यादातर अंदर गेंद लाते हैं, लेकिन इस बार हल्का सा बाहर जरूर निकला। साहबजादा फरहान ने मैदान से बाहर जाने का अब फैसला कर लिया है, शायद उनको ज्यादा मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अरशद इकबाल अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। बाहर निकलकर खेला, लेकिन बिल्कुल करीब फील्डर हो पाया कामरान गुलाम को। यहाँ इससे पहले जो 5 दिन का एक्शन हुआ, उसमें 8 बार ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम सुरखरू हुई, लेकिन क्योंकि ये 5 ओवर्स का मैच है, यहाँ पहले बैटिंग करने वाली टीम पे बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा। बिल्कुल 3 ओवर तक तो ये अच्छा सीम और स्विंग करेगा। अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं केपी के पास, इमरान खान सीनियर, मोहम्मद इमरान जूनियर मौजूद हैं, स्पिनर भी मौजूद है, लेकिन पेसर्स पे ज़्यादा इन्हिसार करेंगे। ये अच्छी हिट लगाई, लेकिन यहाँ पर भी बमुश्किल एक ही रन हासिल कर सकेंगे। शारून जिनने अपना अकाउंट ओपन किया, कुछ वक्त लगता है इस पिचेस पर। अक्सर देखा गया है कि बॉलर जो हैं कुछ गेंदें खेलने के बाद वो ग्रूव में आते हैं, जहाँ तक बड़े शॉट लगाने का ताल्लुक है। आज स्लिप का कोई नामो निशान नहीं है, हालांकि बाएं हाथ कि जब बैट्समैन सामना करते हैं, अरशद इकबाल के लिए स्लिप खड़ी की जाती है। अच्छी डिलीवरी थी, फॉलो किया अरशद ने, और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग भी। रूम पसंद है और जैन अब्बास को ये गेंद था, हार्ड लेंथ पे था, अच्छी पेस के साथ किया। यहाँ पे अगर रूम नहीं देंगे तो शॉट बनानी पड़ेगी जैन अब्बास को। मुँह में तौर पे इनको खिंची हुई लेंथ को ये पुल मारते हैं, कट मारते हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप चेज करने भी चले जाते हैं। और इसी कारआमद मेरा ख्याल है, इसी वजह से, क्योंकि विद इन स्टंप्स रखना है, डीप मिड विकेट को बाउंड्री पे अब तैनात कर दिया गया है। थर्ड मैन सर्कल में मौजूद हो। एक बार फिर वार खाली गया। अरशद इकबाल ने बड़ी नपीतुली बॉलिंग की और बिल्कुल सर उठाने का मौका नहीं दिया सदर्न पंजाब को, जिनका स्कोर है 5। बारिश की वजह से ये रिवाइज कंडीशंस हैं आज के मैच की। किंगडम वैली नेशनल T20 11वां मैच है ये। 5 ओवर्स साइड गेम है, 2 ओवर्स का पावर प्ले और सिर्फ 2 बॉलर हैं, वो 2 ओवर्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इमरान खान जूनियर जो हैं, उनको गेंद सौंपी गई है मीडिया सेंटर एंड से। अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। अपने करियर में 19 विकेटें उड़ाई हुई हैं इमरान जूनियर ने, जो बाएं हाथ के सीमर हैं। 1 रन से कुछ ज़्यादा इनकी सेहत पे बुरा असर नहीं पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा की। और आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि ये तकरीबन 9 साल बाद ऐसा हुआ है कि रावलपिंडी में बारिश से मैच इतना मुतासिर हो गया कि 5-5 ओवर्स की नौबत आ गई। आखिरी बार 2013-14 के सीज़न में
डेरा मुराद जमाली और एबटाबाद का मैच हुआ था, जिसमें एबटाबाद को शिकस्त हो गई थी, वो 36 रन नहीं बना सके थे। यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर आदिल अमीन चले गए, स्क्वायर लेग पर कामरान गुलाम को बाउंड्री पर भेज दिया गया। यही दो फील्डर जो कि पावर प्ले का आखिरी ओवर है बाउंड्री पर रह सकते हैं इस वक्त, और ऑफ साइड में खेल दिया इस बार बड़े शानदार तरीके से, और लाजवाब हिट लगाई पॉइंट के ऊपर 4 रन के लिए जैन अब्बास ने। खराब गेंद थी, अगर फील्ड प्लेसमेंट आप देखें, इरादा ये था कि विद इन स्टंप्स रखते, प्रोटेक्शन मौजूद थी लेग साइड पे, लेकिन रूम दे दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप, अपने अगली टांग को क्लियर करके शानदार शॉट खेली ऑफ साइड पे। चौके आने चाहिए क्योंकि सिर्फ 5 ओवरों का खेल है, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा इन्हें। एक बार फिर उठाकर खेला, गेंद खुले मैदान में जाकर गिरी, 2 रन बन जाएंगे। बिल्कुल प्लग हो गई थी आज आउटफील्ड, पहली बार बारिश से ज्यादा मुतासिर लग रही है। आज सुबह 3 बजे ही यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और ये सिलसिला आज सुबह पहले पहर तक जारी रहा। ये देखिए गेंद तकरीबन प्लग हो गई, और पिंडी में जिस तरह से आउटफील्ड में गेंद चली जाती है वैसा हो नहीं सका। एक और चौका, बैकफुट पर गए, जगह बनाई और मारपीट देखने को मिली। अच्छा प्रिडिक्ट कर रहे हैं जैन अब्बास, क्योंकि लेंथ यही रखनी पड़ेगी इमरान जूनियर को, जो फील्ड उन्होंने ली हुई है लेग साइड पे, उन्होंने अच्छा जज किया, रूम बनाया और ऑफ के ऊपर से चौका हासिल किया। ये बहुत स्मार्ट क्रिकेट है जैन अब्बास की जानिब से। आगे पिच कर नहीं सकते, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सर्कल में नहीं मौजूद, क्योंकि सर्कल में मौजूद है वो। या अगर शॉर्ट गेंद करनी है तो या तो फिर बैट्समैन को फॉलो करें, क्योंकि स्क्वायर लेग पर ये कामरान उसी कैच के मुंतजिर हैं, या फिर फुल लेंथ गेंद करें, क्योंकि लॉन्ग ऑन और फील्डर आपने खड़ा किया हुआ है, ये बेहतर लेंथ है। एक रन बन सकेगा। साहबजादा फरहान आ गए हैं मैदान पर वापस, ये अच्छी खबर है खैबर के लिए। अच्छा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं जैन अब्बास, कईयों का इस्तेमाल किया और अच्छा सिंगल गो के बैक फुट पे थे, थोड़ा सा टाइट हो सकता था, ड्रैग किया नहीं बैट, लेकिन अभी तक जितनी क्रिकेट खेली इन्होंने अच्छी खेली। फिरून सराज के लिए एक डीप लेग मौजूद है, लॉन्ग ऑन मौजूद है। धूप आज पहली बार इस वक्त मैदान पर फैल चुकी है। फौरन अंपायर ने नॉट आउट कह दिया। तीनों स्टंप्स मोहम्मद आसिफ को नजर आ रही थी। वैसे भी ज्यादातर गेंदें इमरान जूनियर की लेग स्टंप के बाहर गिरती हैं, क्योंकि अंपायर से निस्बतन दूर रहकर बॉलिंग करते हैं। शॉट अच्छी अटेम्प्ट की थी, मिड विकेट का एरिया खाली ज़रूर था, और जो एंगल है इमरान जूनियर का, गेंद अंदर को ट्रेवल करनी थी, थोड़ा लेट कर दिया उन्होंने गेंद पकड़ने में। आगे बढ़ के कांटेक्ट करते तो ये यकीनी तौर पे बाउंड्री हासिल कर सकते थे। ये पावर प्ले तमाम हुआ, जिसमें 18 रन सदर्न पंजाब ने स्कोर किए, लेकिन कोई विकेट नहीं मिल सकी खैबर पख्तूनख्वा को। इमरान खान सीनियर आएंगे। देखना ये कि कौन से वो 2 बॉलर होंगे जो 2-2 ओवर करेंगे। एक तो अरशद इकबाल उनमें से जरूर होंगे। और ये अच्छा शॉट यहां पर लगाया, लेकिन रन एक ही मिलेगा। बिल्कुल ऑन द लाइन। अच्छी हिकमत अमली है केपी की जानिब से। स्टार्ट इमरान खान सीनियर का फील्ड के हिसाब से गेंद कराई है। यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। देखिए मेरा ख्याल है सीधा खेलना चाह रहे थे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। हीट मूवमेंट भी नहीं थी। डीप जाके ये एक अच्छी टैक्टिक्स है, क्योंकि
स्विंग निगेट कर देते हैं और आप लेंथ मिल जाती है आपको उसके बल्ले के पार ले जाने के लिए। और इससे उठाकर खेला, लेकिन ये गेंद इब्तिदा से इंतहा तक नहीं जाएगी और कोई गलती देखने में नहीं आई लॉन्ग ऑन की जानिब से। हालांकि एक बार फिर यहाँ पर ऐसा लगता था कि फील्डर टकरा जाएंगे। ज़ैन अब्बास आउट हुए, गेंद ज्यादा उनके बल्ले के पैंदे में लगी, इसलिए वो फील्डर को मात नहीं दे सके। ऑफ साइड पे टारगेट किया था लेकिन शॉट वहाँ फिनिश नहीं हुई और मेरा ख्याल है अच्छी कॉल एंड पे कर दी थी या शायद नहीं की। रिएक्शन यही लग रहा था कि दोनों फील्डर्स ने फिर कॉल नहीं की। दूसरा नुकसान ज़ैन अब्बास 14 बना के वापस। पहला नुकसान ATF सदर्न पंजाब का 19 पे 1। ये अच्छा फैसला किया है, ये गैर रिवायती सा अंदाज अपनाया है मोहम्मद इलियास को वन डाउन पोजीशन पर भेजने का। लेकिन ये ऐसे बैट्समैन हैं जो फिलहाल नॉन स्ट्राइकर हैं, लेकिन ये आड़े हाथों ले सकते हैं इन बॉलर्स को क्रीज पर पहुंचते ही। शामून इनको अच्छी तरह रीड किया हुआ है। शारून के लिए अच्छी फील्डिंग खड़ी की हुई है। ये जो वाइड लॉन्ग ऑफ के फील्डर हैं ये उनको मोहलत दे नहीं रहे और ना ही उन्होंने ज़ैन अब्बास को मोहलत दी। हालांकि इनको नई जिंदगी आज मिल चुकी थी पिछले मैच में सेंट्रल पंजाब के खिलाफ नो बॉल पर जब इनकी विकेट नहीं गिरी थी तो उसका बड़ा इनको फायदा हुआ था, लेकिन आज नहीं। AP की बॉलिंग और जो हिकमत अमली है वो बहुत अच्छी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। अभी तक जितने भी मैचेस खेले एक्सिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी रही है बॉलर्स की जानिब से। अच्छी कप्तानी खालिद उस्मान तरफ से देखने में नज़र आ रही है। फील्ड प्लेसमेंट जब तक बात करें, आहिस्ता गेंद की इलियास जो हैं वो पहले ही शॉट खेलने के लिए खुद को कमिट कर गए। अब एक सवाल ये है मरीना के कितने रन्स यहाँ पर बनाने चाहिए? 5 ओवर्स है, सबको ही इसका ये मुश्किल है शुमार करना। तो बिल्कुल जिस तरह की बॉलिंग हो रही है ये अच्छी चाल चली है ATF सदर्न पंजाब ने इलियास को भेजने की, लेकिन बॉलिंग जिस तरह की हो रही है ये चेक में रखेंगे इन्हें। और अच्छी आवाज आई है इस बार कानों में और नतीजा उससे भी कहीं बढ़कर। गेंद मैदान बदर हुई, पहले से बैकफुट पर तैयार थे और इसे उठा खेला पूरी ताकत के साथ, इसीलिए इलियास को भेजा गया है। अच्छा बैलेंस इनका है, हेड बहुत स्टेबल रहता है। आउटसाइड ऑफ स्टंप इसको फेच किया था और लेंथ ऐसी थी कि टाइम मिल गया था इन्हें मिड विकेट की बाउंड्री के पार पहुंचाते। इनको इस तरह का कैमियो खेलना पड़ेगा एक अच्छा टोटल पोस्ट करने के लिए ATF सदर्न पंजाब की जानिब से। इस वक्त क्योंकि 5 फील्डर्स बाउंड्री पर रखने के मजाज हैं, खालिद उस्मान कप्तान जिसमें 3 ऑन साइड में हैं। और 4 रन्स मिल जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर खासी जगह मिल गई, इसलिए इमरान को सजा मिली। सिर्फ बल्ला इलियास को वहां तक ले जाना था। 2 गेंदों में 10 रन बनाए इलियास ने, खलबली उनने मचा दी है। बहुत समझदार शॉट था ये। इस तरह की फील्ड थी, अगर इसको सामने खेलते स्क्वायर के तो एक ही रन बन पाता, लेकिन बहुत अच्छा स्क्वीज किया, रूम मिल गया था। बल्ला लगाने की देर थी। इलियास बहुत शानदार फॉर्म में। तीन ओवर के बाद 1 ओवर नीचे आप 1 ओवर डाउन 1 ओवर डाउन।
मोहम्मद शहजाद आमतौर पर ओपनिंग करते हैं, लेकिन आज इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाने का फैसला किया गया। मुमकिन है इसके बाद जीशान अशरफ बैटिंग करने के लिए आए। सलमान अली आगा, और एक और शानदार शॉट, एक और छक्का। इस बार शारून थे बैट्समैन, लाजवाब हिट उन्होंने लगाई अरशद इकबाल के खिलाफ। इस तरह का बड़ा शॉट खेलना कभी भी आसान नहीं होता, लंबे कद के बॉलर हैं। इस लेंथ पे चाहे 5 ओवर का खेल हो, चाहे 15 या 20 का, यहाँ पे बॉलर की पिटाई जरूर होगी। बहुत टाइम मिल जाता है, बहुत पीछे गिरा गेंद था और तैयार थे, अगली लेग को क्लियर किया और जो रूम मिलता है इन्हें बैट स्विंग करने का, आर्म्स एक्सटेंड करने का, वो शानदार शॉट थी ये। दोनों बैट्समैन अब डबल फिगर में पहुंच गए हैं। एटीएफ सदर्न पंजाब को रन्स मिलने लगे हैं। आपको बता रहा था कि 2013-14 में जो पांच ओवर्स का मैच नेशनल T20 कप में हुआ था, डेरा मुराद जमाली और एबटाबाद का, उसमें 36 रन का हदफ एबटाबाद की टीम हासिल नहीं कर सकी थी। ये खालिद उस्मान खेले थे जो आज कप्तानी कर रहे हैं केपी की। उस मैच में एबटाबाद ने 24 रन बनाए और उसकी 7 विकेटें गिरी थी। लेकिन आज एक मजबूत टीम का हिस्सा है खालिद उस्मान। अच्छा यॉर्कर पहुंच जाएंगे, लॉन्ग ऑन के फील्डर, उन्हें दबाव में लिया और अच्छी दौड़ लगा दी और दूसरा रन भी हासिल कर लिया। बहुत उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट्स, खेलते साथ ही इलियास ने 2 की कॉल कर दी थी और लॉन्ग ऑन के फील्डर इमरान गुलाम वहां मौजूद थे और उसी प्रेशर की वजह से फंबल करते गए। अच्छी रनिंग है, इसी तरह का दबाव डाल के रखना पड़ेगा एटीएफ सदर्न पंजाब को। यहाँ 7 गेंदों में ये 20 रन यहाँ मिलजुल के बना लिए हैं इलियास और शारून ने। बाउंड्रीज अब आने लगी हैं। सारा बड़ी अच्छी गेंद थी, ऑफ कटर, ये नीचे भी रही। इलियास हिट आउट करने से कासिर रहे। अच्छा सा इनटू द पिच कराया, ज़्यादा बाउंस नहीं मिल पाए, पेस भी कम थी, बहुत जल्दी शॉट खेल गए थे, रीड नहीं कर पाए मोहम्मद इलियास, क्योंकि अगर ये रीड करते तो ये यकीनन बाउंड्री के पार जाती। अच्छा फॉलो अप बॉल था। अरशद इकबाल आज के पहले बॉलर हैं जो अपने 2 ओवर्स करेंगे। 2 से ज्यादा ओवर कोई बॉलर नहीं कर सकता है। इन दिनों अच्छे रिदम और रवानी में नजर आते हैं अरशद इकबाल। एक और अच्छा यॉर्कर, इस बार भी इलियास को बिल्कुल, जिन्होंने अपनी आसीनें चढ़ाई हुई हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं मिल सका। जीशान अशरफ को हालांकि ये सोचा गया होगा कि इनको ओपनर भेजा जाए, लेकिन फिर इनकी फॉर्म ऐसी है जिसकी वजह से इनको मिडिल ऑर्डर में रखा गया। हसन खान भी अच्छे स्ट्राइकर हैं, ये भी पहुंचते हुए ही हिट लगा सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक हिट्स की बात आती है, इनके पास काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आके एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 2 फॉर्म में प्लेयर हैं वो मिडिल में मौजूद हैं, इलियास और शरून की सूरत में। इस बार फिर दूसरे रन की कॉल दी है, रन आउट होने का खतरा, थ्रो पहुंच रही है और काम तमाम हो जाएगा। बड़ी उम्दा थ्रो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से आदिल अमीन ने की, जो अच्छी फील्डिंग फॉर्म में भी हैं अपनी बैटिंग की तरह। और यहाँ ये शारून को वापस जाना होगा। टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार किए बगैर उनने चलना शुरू कर दिया है वापस और ये रस्मी कार्रवाई यहाँ पूरी कर देंगे। बिल्कुल एंड पे फ्रेम में आए हैं नज़र शरून, और इस तरह का खतरा मोल लेना पड़ेगा एटीएफ सदर्न पंजाब को। बैटिंग काफ़ी है, गेंदें कम हैं और टारगेट भी कुछ खास पोस्ट नहीं कर पाए। 2 रन की कॉल कर दी थी और ये कंफर्मेशन आ गई हेड अंपायर की जानिब से। ये दूसरा नुकसान एटीएफ सदर्न पंजाब को। शरून रन आउट हुए 11 पे, 40 पे 2।
एक और बॉलिंग ऑलराउंडर इमरान रंधावा आ गए हैं खेलने के लिए। जीशान अशरफ ऐसा लगता है कि आज सिर्फ विकेट कीपिंग यही करते हुए नजर आएंगे। और कुछ डांस मूव्स। अच्छी डिलीवरी, बहुत ही शानदार ऑफ कटर इमरान जूनियर की जानिब से। और ये देखिए, क्योंकि यहाँ दूसरा रन जरूरी था, हालांकि पहला रन बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल किया था, लेकिन थ्रो इतनी आला पाए की थी कि मोहलत मिली नहीं उन्हें क्रीज के करीब आने की भी। ज्यादा दूर गेंद गया नहीं था, और जिस तरह की आउटफील्ड है, अच्छा लपके गेंद पे, क्विक रिलीज किया और थ्रो भी वन बाउंस पे अच्छी मिली। डाइव कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते। विकेट गिरने का नतीजा ये हुआ है कि वो मोमेंटम खो दिया है एटीएफ सदर्न पंजाब ने। 2 गेंदें बगैर रन के गुजरी हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं केपी के, और ये एक कैप्टन के पास एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपके तीनों पेसर्स एक अच्छे रिदम में विकेट्स ले रहे हैं, अच्छे एरियाज को हिट कर रहे हैं 5 ओवर के गेम में भी। बाउंड्री ऑप्शंस इनके पास हैं, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान गैप है, और उसी तरफ खेल दिया, लेकिन यहाँ बाल बच जाएंगे और दूसरे रन के लिए वापस आना चाहिए। क्या पहुंच सकते हैं? लगता है कि काम तमाम है। जी हाँ, ये आउट हो गए इमरान रंधावा, और मोहम्मद आसिफ ने वही फैसला और अपना हुक्म जो है वो सुना दिया है। इमरान को जाना होगा। यके बाद दीगरे 2 रन आउट। एक बार फिर अटेम्प्ट की थी बड़ी शॉट की, लेकिन अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए आउटफील्ड में, क्योंकि वन बाउंस पे मिल गया था थ्रो। विविड थ्रो थी कीपर की जानिब, लेकिन बहुत टाइम मिल गया था इन्हें, एक और नुकसान उठाना पड़ा। इमरान रंधावा 1 से आगे नहीं बढ़ सके, रन आउट हुए, और 41 मजमूई स्कोर एटीएफ सदर्न पंजाब 3 खिलाड़ियों के आउट होने पे। हसन खान पहुंचे हैं बैटिंग क्रीज पर। उनको इससे पहले भी भेजा जा सकता था, क्योंकि हमने कई बार पीएसएल में देखा है जब पहली गेंद पर ही इन्होंने जाकर छक्का लगा दिया। एक मैच तो इन्होंने, जो मैच की आखिरी गेंद थी, इनकी पहली गेंद थी, इन्होंने छक्का लगाकर जितवा दिया था। लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर ये आउट हो जाएंगे। विकेट कीपर को सूरज सता रहा था, लेकिन इतना नहीं कि हारिस कैच न कर सकें। इस तरह एक और विकेट सस्ते में निमट गई जी, और इस लेंथ ने ज्यादा हसन को सताया। अच्छी गेंद थी, नया बैटर आया, उसको अच्छी पेस के साथ इनटू द डेक की, अच्छा बाउंस मिला, राइज करता जा रहा था, जिसकी वजह से पुल शॉट का आरामद साबित नहीं हुई। और बहुत अच्छा टेक मोहम्मद हारिस का। यहाँ पहले बैट्समैन को मुश्किल पेश आई इस गेंद से, और बाद में विकेट कीपर को, लेकिन फंबल नहीं किया हसन के बरक्स विकेट कीपर ने। 41 पर 4। जीशान अशरफ अपने 1000 रन के ये करीब आ रहे हैं। 5 सेंचुरियां बनाई हुई हैं। अच्छा ओवर, अच्छी वापसी की है। पिछले ओवर में पिटाई हो गई थी इमरान खान जूनियर की। अच्छा बाउंसर, गेंद तवक्को से कहीं ज्यादा तेज आई और तकरीबन कंधे के भी बराबर थी, इसलिए कंट्रोल नहीं कर सके। बहुत मुश्किल हो जाता है जब आते साथ ऐसी अच्छी पेस पे आपको बैकफुट पे खेलना पड़े, क्योंकि आपकी आई सेट नहीं होती। फ्रंट ड्राइव्स फिर भी कदरे आसान होती हैं। इस ओवर में सिर्फ 1 रन
इमरान जूनियर ने दिया और वही एक रन जो है वो हासिल कर सकी एटीएफ सदर्न पंजाब की टीम, और इस तरह उनकी इनिंग्स का खात्मा हो गया मायूस कुन अंदाज में। और उनने 11 गेंदें जो हैं वो खाली खेली हैं इस इनिंग्स में। सिर्फ 3 चौके लगाए, 2 छक्के जरूर देखने को मिले थे बैक टू बैक इलियास और शारून की तरफ से, लेकिन उसके अलावा जो बॉलर्स हैं किसी भी मौके पर रिसीविंग एंड पर रहे नहीं। और अच्छा इख्तिताम किया इमरान जूनियर ने, काबिल तारीफ है उनका ये आखिरी ओवर, और साथ साथ खालिद उस्मान की कप्तानी भी। इसमें कोई शक नहीं, खालिद उस्मान ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। एक अच्छा प्लान नजर आ रहा था, फील्ड प्लेसमेंट बैटर्स के हिसाब से रखी हुई थी और एक्सिक्यूशन उनके बॉलर्स की स्पॉट ऑन थी। जिस तरह की लेंथ उन्होंने अपनाई, अच्छी पेस अपनाई, कोई मोमेंटम बन नहीं सका एटीएफ सदर्न पंजाब का। 14 किए जैन अब्बास ने, 11 शरून ने, मोहम्मद इलियास से उम्मीद थी 9 पे 13 बनाए और उसके बाद कोई भी बैटर नहीं चल पाया, सिर्फ 41 बनाने में कामयाब हुए। यहाँ सिर्फ 3 ही बॉलर्स को यहाँ पर आजमाना था। 2-2 ओवर्स किए इमरान जूनियर और अरशद इकबाल ने, और उनने बिल्कुल फुल खेलने का मौका नहीं दिया। और इमरान खान सीनियर ने भी इमरान जूनियर की तरह एक विकेट हासिल की। टॉस केपी ने जीता, उनने पहले बैटिंग करने की दावत दी एटीएफ सदर्न पंजाब को। ढीला ढाला आगाज था, लेकिन ड्रामाई अंदाज में इस गेंद पर 2 फील्डर टकरा गए कैच करते हुए। उसके बाद 2 बाउंड्रीज हासिल की जैन अब्बास ने। लगता था कि वो कल की तरह अपनी फॉर्म को कैच कराने में कामयाब होंगे, लेकिन उसके बाद कैच दे बैठे आदिल अमीन को। फिर इमरान आए और बड़े शॉट भी नजर आए मोहम्मद इलियास की जानिब से, जिन्होंने छक्का और चौका मुसलसल लगाया। शारून ने भी मिड विकेट पोजीशन पर जोरदार छक्का लगाया और इलियास के साथ दूसरा रन लेते हुए शारून रन आउट हो गए। बड़ा कमाल का पिकअप और थ्रो था, और साथ साथ जो है बॉलर ने इस अंदाज से बेल्स उड़ाई। उसके बाद विकेटें जो हैं वो गिरती नहीं, ये रन आउट हुए अफरीदी और विकेट कीपर पोजीशन से। और उसके बाद हसन खान को ये बाउंसर बिल्कुल भी रास नहीं आया, उन्होंने भी हारिस को आसान से कैच थमा दिया। और इस तरह इमरान जूनियर ने 41 से आगे नहीं जाने दिया एटीएफ सदर्न पंजाब को। तो खैबर पख्तूनख्वा को 42 रन की जरूरत है 8.4 के औसत से, और उनका जवाब हम देखेंगे एक वक्फे के बाद।
Welcome back to the Pindoyi Cricket Stadium, where it's a 5 overs a side game and Khyber Pakhtunkhwa and ATF Southern Punjab head to head. It's been a dismal performance from ATF Southern Punjab with the bat. 5 overs, they didn't seem to be in any game plan. Everyone just came out and tried to swing hard. Good to see Mohammad Ilyas up in the order and got 13 of 9. They managed only 41 for 4 in the 5 overs. Yeah, KP will be happy with this bowling performance. Arshad Iqbal giving away just 15 runs along Mohammad Imran Jr., who bowled a beautiful last over, gave away just 13 runs. Imran Khan Senior getting a wicket, giving away 12 runs only. It's going to be a very interesting chase from KP side. And in my opinion, ATF Southern Punjab would be a touch disappointed because they had a good start, but that last over that Imran Khan Jr. bowled pulled back things in favor of KP, and now they would be hoping to wrap it up early. Just 42 runs they require to win this game in 5 overs at rate of 8.20. This man on your right, Ali Majid Shah, I think he will be the key for Southern Punjab. He's got that X factor in me, would just like to rush it in. And on the other hand, it's Haris. 11 dot balls in the ATF Southern Punjab innings. That's almost 2 overs, so they're only themselves to blame. Haris and Sabzada Farhan are opening. Haris, 79, not out his best in a 20-over version. This is a 5-over game. They don't need to do anything extraordinary. They don't need to finish it in 2, 3, 4 overs. Just take your time. 30 balls, 41. Could be pretty simple, the kind of form and the kind of team game that KP has been showing in this tournament. Ali Majid. It's all about attacking. Attacking cricket will only help ATF Southern Punjab. Not looking to save those runs. Attacking cricket, look to get wickets because the batsman will try to hit you out. 2 overs of power play. 2 overs max per bowler. So whoever bowls the first one, good, will get another one. Get the captain's approval. Here we go, Ali Majid. That's a half tracker. He's lucky that it wasn't put away. Definitely lucky, Ali Majid Shah. Sabzada Farhan had a collision with Adil Amin when he was fielding. That's not a good start. It was there to be hit, but he just couldn't, he was just forcing it. Sabzada Farhan. He's followed the batsman, just a single there. Sun's out now, so things will... Oh, come on now. This is what I said. You don't need to do anything extraordinary here. Sun's beating down, the outfield will get drier, ball will travel quicker, even the pitch, whatever the moisture you were expecting earlier on has been taken advantage of by the fast bowlers from KP. Now it's Haris on strike. Wide, and that'll be a boundary, so that's absolutely criminal. That is not good cricket by Ali Majid Shah. Looking to ball quick, but that line was way outside the leg stump. When you're defending a low total, you got to be saving every possible run, and this is easy pickings. This is easy runs for KP. Southern Punjab must believe that 35 was defended back in 2013 by Dera Murad Jamali. And that's a boundary. It's just dropped short, I suppose. They probably have a second look on that. But it looks like a boundary. Yes, it has been declared a boundary. 2 full in his zone. And we know Haris, he can be very brutal. Have a look at that. Right in his zone, and he's not going to miss out on this. Clearing his left leg, creating some room, getting that boundary. Just drops short. I don't really see the reason that Haris has to do all this. To concentrate playing straight, you're playing well, playing the V.
These improvisations probably are necessary when you can't get the ball away in front of the wicket. That's more like it, even if it's a slog. Try to keep the ball in front of you. And the same ground back in 2013, Dera Murad Jamali defended 35 runs against Ahmedabad. 35 they scored, and they bowled out, not exactly bowled out, but they restricted Ahmedabad on 24. Sabzada Farhan in the gap, should look to get to. Yep, should get it easily. Well, job's done. 13 for no wicket after 1. Yeah, played it right between the fielders. There are 2 fielders placed. Good effort by Ilyas. Was promoted up in the order. This is what one good inning can do. He's been considered as an all-round cricketer now. And he did all right. Scored 11 odd runs. Now that's what we were talking about, Sabzada Farhan. That was a dangerous, dangerous collision. Both men very strong. But when we look at it, it feels like Adil Amin was in more danger than Sabzada Farhan. Well, usually when a fast car hits a car which is parked, the parked car gets more damage. So in this case, Sabzada Farhan was the parked one, is moving slowly. But you're right about that. You get a feeling that he's got a jolt in his neck, Adil Amin. But it was more with the knee jamming into Farhan's chest that gave him the severe pain. And but thankfully, he's out there and he's at the non-strikers. Yeah, they would know about him. Samin Gul has been playing for Khyber Pakhtunkhwa. Has been transferred to southern Punjab. So they would know a few things about him. And he, to the batters, good hard length. This is the length that we talk about on a pitch like this. This is the successful length. Wanted to go big. Khyber Pakhtunkhwa requiring 29 more runs of 23. I heard a sound when the ball passes the bat. Let's hear it again, because no, the gentleman to my right also heard something. Good sharp rise. Good length again. Good pace. Samin Gul, very, very good, very talented fast bowler. Yeah, let's have a look what you were talking about. Let's hear it. You see? You're right. There was something. I'm surprised nobody reacted. Hear it. Something, definitely. Yeah, this time it's clear. Now everyone hears it. Is that great, good length, and you're getting that sharp rise. It's putting Haris in a very odd position, trying to pull that one. He's not in position at all. Yeah, getting too predictable, Haris. He's cleared his left leg a couple of occasions, and somebody like Samin Gul is not going to miss out on that opportunity. Haris gone, scored 5 runs. It's 13 for 1 KP. Amir Azmat played a little cameo in their game yesterday. KB side, they played a game last evening. And now back here again in the morning. But luckily it's a short game, 5 overs, and they're batting second. They're chasing, it's always good. And the target only 42 runs.
Early days for him. Just 102 runs, average 12, strike rate 113. Nicely done. Oh, he's given it a wide. And that wicket again. I wanted to go over that offside, Haris. But the pace, beaten by pace. It would be very interesting to see Salman Ali Agha, who he chooses to bowl these overs. Because Samin Gul is bowling really nicely. At the other hand is Ali Majid Shah. Oh, be careful. He wanted to run. One good over can definitely bring you back. And this is exactly sort of the start that Southern Punjab was looking for from Samin Gul. Now I want 2 overs like this. Let's make a match of it. But I'm still very interested that wide ball. I would love to see that side on. How high was it? Because Ahmed Asbath is a tall man. In the air, should be taken. Come on. It's going high. That might just go to the boundary for a bounce, but no. Ali Majid is there. Yeah, was always going away from him. He tried his best, Ali Majid Shah. It's never easy when it's going so away from you. Running backwards. Have a look at that. They had to go after it. It was in the air for a long, long time. Cannot blame the fielder there. 16 for 1. Interesting. It's going to get interesting, I tell you. Yeah, make it interesting. Come on. Should be a fight. Shouldn't be difficult. It's just about that 1 over and you're right there. This is like 99% KP's game at the moment. One hand off the handle. Should go for 2 at least. Good stop. Got to release the ball quickly. Don't allow the third, and they won't go for it either. Not a bad over this. Yes, 5 have gone. They're checking the boundary. But he's covered it a little bit for that expensive first over from Ali Majid. Let's have a look at this. He's flicked it back, so no problems, even if he touches the rope. End of the over. It's 18 for 1. Two overs power play is done. Now the remaining 3 overs is Mohammad Ilyas now coming in. And they need a good over from here, from Ilyas at the moment. 24 runs, 18 deliveries. 1 good over will definitely bring them back in the game. Either side at the moment. 1 good over for KP will take the game away from Southern. That is why I said this is the most important over, which has been bowled by Ilyas in place of Ali Majid Shah. 23 years of age, 47 wickets to his name. Best of 3 for 25. Just keep it as a game that you need 24 of 18 and it's gettable. You got 9 wickets in hand. Forget about the 5 overs. That's how you should run. Wild swing, gone. Sahibzada Farhan. Next one. It's 18 for 2 here. It was there to be hit, but I don't know if that's required. Again, 24 of 17. What a wonderful start. That is what Southern were hoping from Mohammad Ilyas. He's had a good day with the bat and now proving it with the ball of getting a very important wicket of Sahibzada Farhan on the very first delivery he bowled.
As you said, was there a need? But it was a little full. It was there in his range to go. But very smart bowling by Ilyas, getting the second wicket for KB. Bit of bother for them, 18 for 2. Yeah, so what KB are doing is they're sending in their big hitters because they've got Khalid Usman, Kamran Ghulam, Adil Amin still to come. But they're giving the opportunity to somebody like Amir Azmat, Mohammad Sarwar, the big hitters of the game. Don't worry. Lot of deliveries to the ball. Just that you just need that 1 over somewhere. Even not even 1 over. 2 good overs, like fairly good overs. Let's just start with 1. This is 1. That's it. No worries. Boundary straight away. Bad ball in the context of the game. Anything on the legs is asking for trouble. Yeah, that's what happens in a short game. You got 8 wickets in hand, no fear of losing the wicket. Just got to go after it. That's what they did. He shouldn't go for that line. He should take a leaf out of Samin Gul's over. Hit the deck, try to get that ball to rise from the good lane, but it's just that two very different kind of bowlers. There, see, this trouble. He's got a glove to it, but that still goes to the boundary. Or no, just no, it'll die on its own. They'll come back for the 3rd. Even if they don't, they get 3 because this must be a wide as well. No, or is it? Yes, some part of the body has touched. The line again. It's not a good line. Off the glove. Has earned him a couple of runs. Ilyas 6 runs and a wicket. His first 3 deliveries. They need another 3 dot balls from here on. They got to give 18 runs at least from the last 2. But firstly, he needs to bowl off stump line. Then hope for the best. That's more like it. Off stump line. Opportunity. Should take it. Salman Agha, yeah. Ball off stump and then shouldn't be a problem. You bowl leg stump and you're just giving freebies. Good catch by the captain. He suggests he didn't get it. But it's the wicket that matters and they've got it. Pitched up as you suggested. Got the wicket. Because they had to go after him. They've got plenty of batting. They don't want to leave out a lot for the last over. 18 or 14. Mohammad Sarwar gone. I scored 6 runs. It's 24 for 3. अब ये ग्लव्स देखो पूरे रेड है जो ये पहन के आ रहा है Adil Amin, the new batter in with KP, 24 for 3. And he's signaling to the dressing room. I think he's forgotten something. He's got something wrong. The color of the gloves. Nice color though. Red. Yeah, that's the problem. Either you have gloves matching with your kit, or you got white standard color. It's not that kind of a pitch where it'll come straight away onto your bat. You've got to just hold on to your shot a little more, fraction of a second more, and then go for those big ones. The ball wasn't anything like big on him. Just you get a touch early into the shot. You don't get into the sweet part of the bat. Now, the player of the match from yesterday, Adil Amin. He's on strike is Amir.
That's wide. I agree with your point that you made. There was no need of going big on every delivery. They could have done it with singles and twos. But they decided they're going to go big, they're going to go for glory and chase it down one over before. Well, even the bowlers are not doing any favors to themselves. Bowling down the wicket, wides, making the keeper work hard. Now a wide outside off. Keep it off stump, off stump. No, that's just gone into the body. But still not the ideal length that you'd like to bowl. Didn't get this approach by KP. They're just going after every delivery. It could have nudged in and get a couple. That will make things very easier. But they're going to go big. They've decided that they're going to go after anything that is pitched up. Amir Azmat played a little cameo yesterday. Khyber Pakhtunkhwa requires 17 runs now of 13. A dot ball would be very helpful for Southern Punjab here. Next man in. That's more like it. Mix it up. The keeper has given away that single. You've got to stop those. So frustrating for the bowler. 26 for 3. That's pretty ordinary by the wicketkeeper. The makeshift wicketkeeper, Zishan Ashraf. Well, I won't exactly call him makeshift now because he's been wicketkeeping for a couple of years now. And when you're defending slow total, you got to save every run. And this is not the first time that he has fumbled behind the stumps. And now the situation is that Khyber Pakhtunkhwa requires 16 of 12. Two, 5, 4, 6, 0. That's how it stands for KP. 26 for 3. Two over 16. If he can bowl a good over, leave them to score double digits in the last, then it's amazing. That's good. Now we're talking. And Sameen is the right man to do it. If he can repeat what he did in the first over, then fair enough. But beware, Zishan, the keeper. You might get a few short balls, so stretch your arms. Should be a single. He's the right man to bowl this over. Sameen Gul. Tell us more about this, Ali. You like this dish. I see you having it every morning for breakfast. Yeah, I just love it. Anytime, any day. Spicy chana chaat and the combination with the salad around it, just amazing. You tried it? I'd love to. And this is something amazing with a cup of tea in the evening. Be nice. Love to have those, but you guys just don't take us out. Tomorrow morning. Yeah, and who's going to do the match? Yeah, should be all right. Just around that line. Just around that danger line. The bowler is safe. Yeah, that is superb bowling. Exactly what is expected from your premier bowler, fast bowler, Sameen Gul. 15 runs off 10. How many runs would KP hope for the last over? Single digit? 8 or 9? 2 balls, 1 run in the over. 15 of 10. Sameen Gul. I'd like to see the keeper stand up a little more. Collecting the ball around the shin area. Gets the thick outside edge and just 1. Here's a couple of balls. We've got to see where Zishan is standing and where does he collect the ball. And then that's the problem. If he bowls a slower one, then he'll get that odd half volley. And then that's a problem for him, and that happened with Ilyas as well. Yeah, maybe just because these pitches have a little bit of extra bounce and pace in them. And we all know that Zishan Ashraf is not a regular wicketkeeper. He's a mile and a half away. Almost a couple of steps from the 30-yard circle.
He's got hold of that. He's got hold of that. You can tell from the minute it hit the bat. Now they've been searching for this length, and that is the first poor delivery that Samin Gul has bowled and has been penalized for it. That length, they've been searching for it. Given it, it has been treated like it deserved it. Over that cow corner. Excellent result for KP. They now need 8 more runs of 8 deliveries. Should be a simple job from here on. Do it in singles and twos. We all know what KP are. They're going to go after him. They're going to finish it. They're going to try to finish it in the same over. You want singles and twos. You wanted to finish this in 3 overs, you said. I just realized how to play on this pitch. This is not the sort of pitch that you're going to come and go big. Let's see what Samin Gul has up his sleeve. Yeah, a slower one. You see that? That's the problem. He got it on the second bounce, Zishan, the keeper. It's just so amazing. They're just going to go after it. The equation is simple. We can do it with single and twos. But no, they're going for glory. Outside the off stump. 7 balls, 8 runs. That's the equation. That's what you need to look at. Forget about the wickets. Forget about anything else. 1 big hit and the game is sorted. It's already just that 1 6 in there that has helped them. Otherwise, it's been 2 dots, 2 singles, 1 more hit, and it's done and dusted. Again, tries to pull it. He wants to, and he's taking a chance on that. Good throw is a worry. The ball wasn't collected properly by Samin Gul. Otherwise, he was a goner. Good commitment shown by Adil Amin. He was the one running towards that danger end. Oh, look at that. Played it between the 2 fielders. Was a very, very good throw by Sharoon. Look at that commitment. Oh, had he collected it, that would have made things very interesting. Shahzad the man there. Oh, that's Samin Gul's fault, clearly. That's the end of the over. And the equation is that KP now requires 6 to win of 6 deliveries. Lias is going to bowl the last over. Which side is it going? Which side this match is going, Sikandar? 6 of 6. Yeah, from what I saw in the first over from Elias, he bowled 3 deliveries on the leg stump. So that's something he needs to not do. First get your ball in the right area, then you get hit, not a problem, because it's a 5-over game. You're bowling on the leg side, that's not going to help you. He's going to swing his bat. If it gets in the red R, it'll be a big 6. If it doesn't, you probably end up giving extras, and you know your keeper is struggling anyway. Your final leg is up, off stump line. Slower ones, variations. You see, leg stump is a problem. He's lucky, but it's a problem. Had he picked it up, there's no way short final leg can do anything. Leg by signaled. That one last over where Imran Khan Jr. gave away just 1 run. That's going to hurt Southern. Again, that line towards that leg stump. As you said, just put the bat on the ball, you got runs. That is what he was attempting. And rightly so, because line was there. And the length not quite there. So equation is that Khyber Pakhtunkhwa require 5 runs to win of 5 deliveries. Get it on the off stump. At a good length. Catch it is the call, but it won't be near any fielder. Oh, come on. Could have been a better effort from third man. That is not acceptable. Ali Majid down there. There's no excuse. He's being swapped now. Yep, better effort was required. It was in the air for a long, long time. He didn't even try for it. That's the worst part. 4 of 4. You grab those half chances. You got to do that in a situation like this. I mean, what are you thinking? 4 of 4. And that's that. Game, set and match.
was always on the cards. That length they've been searching for. And Ilyas providing it for the first time in this over, and he's been hit towards that cow corner for a huge 6 by Adil Amin. He finished the game yesterday, he's finished it today. What a key member for KP he is. This man on your screen, he was the player of the match yesterday. And playing an important inning here, although he scored just 7 runs, but these are 7 important runs. As far as this game is concerned, it is done and dusted. KP has won it by 7 wickets. They chased down the score in 4.3 overs. Remember, it was just a 5-over game. Southern Punjab batting first, scoring 44 runs. They'll be disappointed. They were in the game, but probably, in my opinion, it was their fielding that let them down. A few fumbles here or there. And we all know that in a shorter game, teams batting second always have the edge. And that is how this game ended. On the leg stump, gentle, easy pickings for Adil Amin. And we all know that when he hits, it stays hit. They're all happy because they were in a bit of worry. Amin bowled a beautiful spell. So did Ilyas. But in such a short game, the margin of error is so minimum that you just can't give away too many extra runs, which Southern Punjab gave. Fumbles by the keeper, overthrow, missed run out. All these things matter in this short game. That's how the scorecard looks like. Sabzada Farhan scored 2 runs. Haris, they just wanted to go big at the start, scored 5 runs. Amir Azmat played a very important knock, was not out on 14. Sarwar Afridi scored 6. Adil Amin, the man in form, scored 7 runs. 3 bowlers used, as it was expected. Ali Majid Shah 1 run for 12. Sameen Gul was pick of bowlers, 2 overs for 15. He's got 1 wicket. Ilyas, what a day he is having. He scored some runs and now getting a couple of wickets, just giving away 14 runs. It has been a good performance by KP side. It was expected. It is the 4th consecutive win and they're at the top of the table, and why not? They've played some excellent cricket. Have a look at this. Sabzada Farhan and Haris, they were given the task to chase down that 44 runs. They were helped by some average bowling and fielding.